हेलो क्लास 10th, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिक्षक जंक्शन। क्योंकि अब नहीं तो कब। राधे राधे ऑल ऑफ यू। नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वी विल नाउ टॉक अबाउट द डिटेल्स ऑफ दिस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसा कि हमने मेल में स्टार्ट किया था वैसे ही फीमेल में भी स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जस्ट सी दीज स्ट्रक्चर्स और द ऑर्गन्स दैट आर इन्वॉल्व्ड विद इन दिस। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ a pair of ovaries. It is written from in the figure itself. This fallopian tube को आप एक और नाम देते हैं जिसको हम बोलते हैं oviduct। जैसे वहां पर हमने sperm duct बोला था, the structure which carries the sperm from the testis to the outside of the body, or it leads to the tubes that leads to outside of the body was the sperm duct. Similarly here this fallopian tube is known as oviduct। क्यों बोलते हैं वो भी अभी आपको समझ में आएगा। Next you have the uterus, then you have the cervix and you have the vagina or vagina। ठीक है, so these are all the structures that are there within the female reproductive system। तो सबसे पहले हम अपने primary reproductive structure से ही शुरू करेंगे, that is a pair of ovaries। Again a rounded structure, it occurs in the pair and जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में था कि टेस्टिस इट वॉज द प्राइमरी स्ट्रक्चर बट इट इज लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। दीज ओवरीज आर प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज नो सच लिमिटेशन की द ओवम दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज ओवरीज रिक्वायर अ मच लोअर टेम्परेचर इज देयर, दैट इज व्हाई दीज ओवरीज आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अब ये ओवरीज क्या सीक्रेट करती हैं या क्या फॉर्म करती हैं? दीज ओवरीज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द फीमेल गैमेट, दैट इज द ओवम और द ओवा और द एग। ठीक, अपार्ट फ्रॉम दीज गैमेट्स दे ऑल्सो लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ द हॉर्मोन्स, दैट इज दिस एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। दैट इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स ऑल्सो। आई थिंक ये आपको याद होगा कि ये दो हॉर्मोन्स भी यही ओवरीज ही प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, दीज ओवरीज कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। दीज ओवरीज एट द टाइम ऑफ बर्थ कंटेन सेवरल इमैच्योर फॉलिकल्स और इमेच्योर एग्स। ठीक है, इमेच्योर एग्स नहीं बोलते हम, इमेच्योर फॉलिकल्स बोलते हैं। सिमिलर थिंग है, बस डिफरेंस क्या है कि वो इमेच्योर है इसीलिए उसको फॉलिकल्स बोला। एज सून एज द फीमेल्स रीच द एज ऑफ द प्यूबर्टी दीज इमेच्योर फॉलिकल्स कंप्लीट देयर डिविजन and they gets converted into the mature gametes, what we term it as the eggs. This is the basic difference. I repeat it once again. These ovaries at the time of birth itself contain several immature eggs in the form of the follicles which mature at the time of the puberty and then it leads to the formation of the eggs. So this is the special feature in case of the female reproductive system. ठीक, नाउ फ्रॉम द फिगर ये है हमारी ओवरीज। ठीक है, दीज ओवरीज आर कनेक्टेड टू द फैलोपियन ट्यूब और द ओविडक्ट बट नॉट डायरेक्टली। ओवरीज के बाद क्या आएगा हमारा ओविडक्ट या फिर फैलोपियन ट्यूब। दीज ओविडक्ट अगेन दो ओवरीज हैं तो दो ही ओविडक्ट्स होंगे, मतलब दो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे, लेकिन दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू दी ओवरीज। हाउ आर दे कनेक्टेड? See there you in the figure also you can see the canopy like structure that is there visible in the figure। तो ये जो canopy like structure है यही हमारी ovaries को इन oviduct से कनेक्ट करता है। canopy भी बोल सकते हो, funnel like structure भी आप इसको टर्म कर सकते हो। ठीक है, this oviducts are important, they are not directly connected to the ovaries। ठीक है, सेंटेंस को पूरा कर देते हैं, चलो। Now the ovum or the egg that has been produced by the ovaries gets into the oviduct with the help of this funnel like structure that is there in the figure. Now these oviducts are important because the process of fertilization takes place within the ओविडक्ट इटसेल्फ। ठीक है, फर्टिलाइजेशन मतलब मेल गैमेट जो है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू प्रोड्यूस हुआ था वो अब इस ओविडक्ट में आके ही फीमेल गैमेट के साथ यूज करेगा इन ऑर्डर टू फॉर्म द जाइगोट। दैट मीन्स दिस ओविडक्ट बिकम्स द साइट ऑफ द फर्टिलाइजेशन। दिस ऑल्सो यू हैव टू keep in mind regarding this oviduct as well as this ovaries. This particular point is very important.
Now after fertilization, the zygote that is formed gets into from the oviduct to a bag like structure that is connected to these oviduct, and that is known as the uterus or the womb. ठीक है, ये जो यूट्रस है, बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको फिगर में दिख रहा है, दिस पर्टिकुलर पोर्शन, इट इज दिस यूट्रस और द वूम वेयर आफ्टर फर्टिलाइजेशन zygote gets into. This uterus provides the suitable place for the development of the zygote. वो अभी हम देखेंगे कि कैसे होता है फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट. ठीक, यूट्रस उसके बाद में एक नैरो ट्यूब से कनेक्टेड होता है, उस नैरो ट्यूब को हम बोलते हैं सर्विक्स. Right, this cervix is again connected to yet another tube like structure that opens outside the body, and it is known as the vagina. ठीक है, और vagina. So this is all about the female reproductive system. Now this vagina is important. Why? Because it receives the sperms during the copulation, which ultimately leads to the fertilization, and it also serve as the birth canal. Birth canal क्यों बोलते हैं इसको? Because after the full development, the fetus comes out through this particular structure. That is why it is termed as the birth canal. So this is all about the reproductive structures that are प्रेजेंट विद इन द फीमेल्स. चलो, जैसे मेल्स में हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था, वैसे ही फीमेल्स के केस में भी ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम द फिगर इटसेल्फ. ठीक है, चलो अब वो फ्लो चार्ट देख लेते हैं एक बार फिर से. विद आई जस्ट राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स एंड विल एक्सप्लेन यू हाउ दे आर इम्पॉर्टेंट. तो सबसे पहले आएंगे हमारे प्राइमरी organ फीमेल का, that is a pair of the ovaries that leads to the production of the ovum as well as the hormones. जो hormones है वो कौन कौन से हैं? Estrogen and progesterone. These ovaries are connected to the oviduct by a funnel shaped structure. This oviduct act as a site of fertilization. That means the male gametes that are produced, that are the sperms, moves to this particular site in order to fertilize the ovum, that is the female gamete, and that are produced by the ovaries. That is the primary structure of the female reproductive system. After the fertilization, what happens is you have the zygote. This zygote then undergoes the development. How it goes into, it moves slowly from the fallopian tube to a bag-like structure that is known as the uterus or the womb. This uterus contains very many things which in turn provides the nutrition to the developing embryo. That is why it is called a bag-like structure or the womb. womb की स्पेलिंग लिख देती हूँ एक बार, हो सकता है कंफ्यूजन हो कि क्या होता है. ठीक है, नाउ दिस यूट्रस इज कनेक्टेड थ्रू अ नैरो ओपनिंग कॉल्ड एज द सर्विक्स, which is yet connected to another opening that opens outside the body, that is called as the vagina. This vagina is important. Why? Because it contains, अच्छा यहाँ पर भी ऐसे बना देते हैं इसको. ठीक है, because it receives the sperms during the copulation process, which will ultimately lead to the fertilization, and also it serves as the birth canal. Why birth canal? Because it is this tube like structure only from where the passage of the fully developed fetus takes place. So this is how the female reproductive system works, and all these structures are connected like that. The complexity of this female reproductive system is much greater than that of the male reproductive system. ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आपको फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. चलो, अब जब ये क्लियर हो गया है तो बात आएगी हमारी किसकी? फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट की. सो लेट मी जस्ट remove all this, and now we will talk about this particular thing, that is the fertilization and the embryo development. ठीक है, हाँ चलो अब देखो ज़रा फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियो डेवलपमेंट में क्या होगा. हमने अभी देखा कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है. फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस which involves the fusion of the male and the female gametes, and within the humans this fertilization takes place in the oviduct of the female reproductive
सिस्टम, ठीक है। यहाँ हमने देख लिया था अभी थोड़ी देर पहले ही। तो क्या होगा, इस ओविडक्ट के अंदर स्पर्म्स दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन दी टेस्टिस इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू दी वेजाइना, right? From the vagina, these sperms being motile, they reach, and because they are active, they reach, these sperms reach till the oviduct or the fallopian tube, ठीक, and then it leads to the fertilization. An important point which you have to keep in mind during this is only one sperm leads to the fertilization of the ovum to form the zygote. बहुत important point है और आपको ध्यान में रखना पड़ेगा. Only one sperm has the capability to fuse with the ovum, which will ultimately lead to the formation of the zygote. Now what happens is this zygote divides rapidly through the process of the mitosis. देखो एक और important point यहाँ पर आया कि जो zygote है वो कौन से सेल डिवीजन से डिवाइड होगा, इस माइटोसिस सेल डिवीजन से, और ओविडक्ट से नीचे जाएगा किस में चेंज हो जाएगा इस माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू. इट फॉर्म्स नाउ व्हाट इज नोन एज द एम्ब्रियो. नाउ दिस एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इनटू द थिक लाइनिंग ऑफ द यूट्रस. ठीक है, देखो क्या बोला मैंने एक बार फिर से. दिस zygote divides rapidly through the process of the mitosis. After division or subsequent divisions of the zygote, the process of mitosis leads to the formation of the embryo. This embryo moves down and then it gets implanted, or it gets embedded into the thick lining of the uterus. This particular process where the embryo gets embedded into the lining of the uterus is known as what? The process is known as implantation. देखो इसीलिए मैंने कलर भी चेंज किया कि आपको पता चल जाए कि कैसे लिखना है या फिर क्या बोलते हैं उसको. ठीक है, इट इज नोन एज इम्प्लांटेशन. ठीक, समझ में आया. एम्ब्रियो, ये बात भी ध्यान रखनी है कि द zygote does not get embedded into the uterus lining, it is the embryo. और ये एम्ब्रियो बनता है हमारे इस zygote के माइटोटिक डिवीजन के मल्टीप्लिकेशंस के, जो कि यूट्रस में जाके एम्बेड करेगा, यूट्रस की लाइनिंग में जाकर फिक्स हो जाएगा या उसके अंदर जाएगा. बिकॉज यूट्रस कंटेन सर्टेन nutrients or blood supply, because of which the embryo develops further, and the process of embedding the embryo into the uterus is known as what? It is known as the implantation. Now after implantation what happens is a disc like structure. अब चलो यहीं से इसी कलर से शुरू करते हैं. ठीक है, a disc like structure gets formed which in turn connects the developing embryo to the mother body. मतलब ये जो हमारा यूट्रस है, इस यूट्राइन वॉल और एम्ब्रियो के बीच में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा. उस डिस्क लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं, अगेन आई विल चेंज द कलर एंड देन मेक यू write it down what it is known as. This disc like structure is known as what? It is known as placenta. ठीक है, this placenta has a very important role to play in the development of the fetus. कैसे, उसको explain करने के लिए let me provide you with the figure so that you have an easy understanding of what is there. ठीक है, चलो देखो इस फिगर से आपको समझ में आएगा. ठीक, देखो जरा मैं क्या मार्क कर रही हूँ. दिस इज द डेवलपिंग फीटस विच यू कैन सी फ्रॉम द फिगर. ओके, दिस द डॉट स्ट्रक्चर्स. अच्छा, डॉट नहीं आ रहा इसके ऊपर, तो उसको भी मेरे को एक बार देखना पड़ेगा कि क्यों नहीं आ रहा है वो. जस्ट वेट, 1 मिनट वेट करो, अभी आएगा वो डॉट. ठीक है, हाँ अब देखो, अब शायद आ जाए. Let me just check it out. No, it is not coming. चलो
ऐसे ही देखो, ऐसे ही समझो इसको, ये जो अंदर जहां पर पॉइंटर चल रहा है मेरा, दिस इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो दैट इज गेटिंग इनटू द मदर्स बॉडी, डेवलपिंग. नाउ दिस प्लेसेंटा फॉर्म्स द स्ट्रक्चर, or this is the disc like structure that we have discussed. This placenta is important. Why? Because this placenta act or it serve in the exchange of what? In the exchange of the nutrients, oxygen, as well as the exchange of waste materials in the body of the fetus with the mother's body. देखो, जो डेवलपिंग फीटस है उसको मदर की बॉडी से न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और वेस्ट का रिमूवल भी होना चाहिए. इफ द फीटस हैज टू be developing in a healthy way. So how it is facilitated? It gets facilitated by means of the structure that is known as this placenta. That is why the structure, this particular structure placenta is important. अब जो प्लेसेंटा है वो जो मदर की बॉडी है उससे कैसे कनेक्टेड रहता है, या फिर fetus जो है, this is the fetus, developing fetus, I have told you this fetus is attached or is connected to the mother's body or through the placenta by means of yet another structure that is known as umbilical cord. ठीक है, this umbilical cord, so just it is a connection between the fetus, मतलब placenta and the mother's body, nothing else. placenta जो है वो एक outgrowth structure है, वो ये जो आप amnion यहाँ पर देख रहे हैं अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा, but बाद में समझ में आएगा. That is to be need to be discussed in your higher standards. But yes, this placenta is connected to the mother's body, or the fetus is connected to the placenta in the mother's body through this umbilical cord. ठीक, तो यहाँ तक तो ये हो गया कि न्यूट्रिएंट्स कैसे सप्लाई होते हैं. अब द टाइम पीरियड, अनदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी टू डिस्कस हेयर is with respect to the fertilization period. So usually in case of humans, the normal period or the time taken from the fertilization till the birth of a baby is of approximately 9 months, or you can say it is approximately of 38 weeks, and this particular time period is known as gestation period. ठीक, कुछ अलग नहीं है. gestation period का मतलब है the time period during which a fully developed fetus from the fertilization till the fully developed fetus is delivered out of the body is known as this gestation period, and this gestation period is achieved by the strong uterine contractions that are rhythmic. Okay, as soon as the fetus gets fully developed, it sends the signals which leads to these strong and rhythmic uterine contractions, which ultimately lead to the expulsion of the fully developed fetus outside the body. So this is all about the reproduction system in case of the females, or you can say the fertilization as well as the embryo development. आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा जो भी अभी तक हमने देखा है. अगर नहीं हुआ है तो बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है मेरे को, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जो भी कुछ क्लियर नहीं है. ठीक है, इसके बाद एक और लेक्चर में हम इस चैप्टर को एंड करेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन ईदर टू द रिवीजन और टू दी लाइव टेस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर इफ़ यू डू नॉट हैव दी डाउट्स. ऑब्वियसली अगर डाउट्स हैं तो पहले डाउट सेशन लगा के उसके बाद हम और कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो एक और लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर के मिलेंगे इसी तरीके से, बिकॉज एक और फिगर है जिसके थ्रू आपको एक्सप्लेन करना है. अगर ऐसे ही हो जाएगा तो आई विल टेक इट इन द लाइव क्लास एंड वी विल एंड ऑन दिस चैप्टर. ठीक है, तो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, टेक केयर, राधे राधे.